ये बोल रहा है टिक टिक और यहीं पर आपका वक्त समाप्त होता है थैंक यू वेरी मच जवाब फिर से ट्रिपलिंग अरे यार give them a big round of applause please यार ladies and gentlemen That was a thank tough you so one. much thank you very much for your time Yeah. thank you That was tough. thank you very much thank you Yeah. guys you can't let them go off Tough. stage like that they For these volunteered a bigger round of applause for them यार come on let's show them some love तेरी इसकी टर्न नहीं नहीं, आएगी कोई बात नहीं। इसकी टर्न नहीं नहीं आएगी नहीं कोई बात नहीं कोई जरूरत नहीं ओह नहीं ओह नहीं नहीं मैं ठीक है आई एम ओके सर आप वो बिगर प्लेयर हमने प्रूव कर दिया कि हम लोग इशारे समझ जाते हैं एक दूसरे के आप यहाँ पे आइए चलो इस बार भी कर लेते नहीं तो You don't need to do anything. sometimes the universe just Baba, you're conspires to beautiful. give you what you want motherfucker एक मिनट कैच आ गया पानी है क्या Alright, thank you guys. Thank you so much for your time. Thank you, brother. Thank you very much. Thank you. You want to just say thank you? Hey, wait. Bye, thank you. Hey, this is not एक पल का जीना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे. Wait. Hey, this is for you. This is for you. हमें we'll also get. And this is for you. आप लोगों को भी मिल रहा है ना? Yeah. आप लोगों का ही शो है. Everything is हमें yours. ये वो चाहिए जो उनको मिल रहा है. वो हाँ दे दो ना यार. आप शर्मा रही क्यों? आप दे दीजिए. हाँ एक. अरे लिफाफे में 101 रुपया है दो हमको दो सर शादी में जरूर आइए सर. थैंक यू मैम शादी में जरूर. शादी तो जीत के गए कुछ तो. खाली हाथ नहीं है. तालियां हो जाए भाई. Alright. ये पहले से ही पता होना चाहिए था. Okay guys, we are moving to the last part of our show. I'd once again like to invite on stage Manish Kalra, Nimisha Pandey, and yes of course Arunab Kumar. Please come on stage. If you had to describe this series एक शब्द में, what it means to you, we'll start with you Nimisha. आपको क्या एक शब्द में एक adjective देना होता तो? Wow. Is that the word? Wow. Thanks. Wow. Even Saif would say wow. So super fun amazing. That's 2 words. all right yeah super सुमित आप क्या कहेंगे? family Oh, that was mine. I was thinking of family. But ठीक है, it's okay. आप Are you looking at me? Yeah. Oh, sorry. Oh, yeah. Can we? Sorry. Let's go to him because I thought of family and then he threw me off with that. Warm. Interesting. I don't want to. तारीफ तो उस पे भी की उसने तो तुम क्यों करनी पड़ गई उसको. Warm तो है series. Quirky it is. Ladies and gentlemen, something that is awesome, super fun, warm, quirky, and yes, of course, family. Let's give it up for all our families, our sibling rivalries, the love, the nook, joke, and everything that we share within our families. All right. So आपको जब आप कोई character में घुस जाते हैं, like we got to know it from him, वो किस प्रकार से he becomes the character. What is your process to get into this very serious personality? Or we also have Neeraj with us, the director of the show. our director Neeraj Udwani Neeraj Udwani with us here. Coming straight from the airport. यूएस से डायरेक्ट ट्रिप लेकर के सीधा अभी. Neeraj, welcome. Thank you so much for joining us. Thank you very much. And the Mumbai rains and the traffic and the potholes must have taken Battle forever. them all. welcome back Welcome. And सात few समंदर पार करके आया हूँ मैं ये bumps, event के लिए. bumps on the road and screw ups by my team. So sorry on that. चलो यार अब यार everything that has started well has to also end well. लेकिन उसके पहले if you've got any questions to the team, please अपना नाम लीजिए, अपने publication का नाम या अपने media house का नाम, and then please introduce yourself and then ask your question. Go for it, guys. Let's go. Please raise your hands if you have to ask a question, and please introduce yourself so we can pass the mic to you. YouTubers, content creators, anybody, any question, please raise your hands and channel, like, subscribe and follow. We would also love to know some of the channels that you guys are running here. So we would love to know about that. Absolutely. Go yaar, I think now that I know your name, so maybe yeah. We'll किसी को कुछ नहीं पूछना है, नहीं ऐसे नहीं मत वो है करो यार. पीछे दिख नहीं I रहा think है. everybody knows everything about the show No, I think we left a question, Sumit, like what is your process of getting in the skin of a character? Because आप
you're a complete older brother. तो वो scene में how do you, as an artist, how do you get out of it and be the character? I mean, for me, it's a slightly different process for this show because I get unfair advantage that I get to spend more time with the character, with the script, Right. while writing it. Right. For them, it's probably harder because they get it once everything is ready. Right. I mean, the only harder part is to not, what do you say? Not get distracted with everything else that is happening. Right. You know, like to shut the writer in you and just be just purely an actor and do your job and go home. Right. Which is something that I want to learn and do more often. Manvi, the same question to you. As an artist, as a creator, as someone who's resonating to everybody, everybody finds your character. उनकी हर एक इंसान की एक कहानी आपके साथ वो जोड़ सकते हैं अपने तरीके से. So it also becomes like this: with great power comes great responsibility kind of thing. With everybody can figure out something. What is your process? How do you get out of the character? Because I, as a human being, I'm 80% the last movie I saw and 20% me. She hasn't gotten out of the character. She's in character. So how do you switch? I was going to say the best way to be able to get out of character is to not get into it only. So, no, but I. But like, you know, shot khatam ho gaya, your backup ho gaya, aap ghar jate hain. How do you like say, okay, I'm done with this now. I need to get back to my real life. Like, does that happen? Because I'm not into the acting world, so I don't know how this works. It happens with like certain characters, but Okay. with Chanchal, I feel she's fairly regular, right? She's a regular Right. girl. We've seen her before. Right. वैसा उसमें कुछ बहुत वो नहीं है कि कुछ चल रहा है दिमाग में जो एकदम ही समझ नहीं आ रहा or anything. She's quite normal. Of course, she has जैसा हर character का होता है strengths and weaknesses, but so it's not really very hard to get out of. Okay. Switch on, switch off easily हो जाता है. Thank Plus, you. this set is like that. Like the minute we say cut, हम हंसने खेलने लग जाते हैं. Right. So, yeah. Yes, you want to share something? Yes, please, Because please. they've been playing this character for so long. Yes. This is the 3rd season. So I mean, they know the character in and out. They know कि ये line ऐसे बोलेगी चंचल, चंदन ऐसे बोलेगा, चित्तन ऐसे Right, बोलेगा. right. So वो I think first season में उन्होंने वो homework कर लिया होगा. Right now it's just second nature for them. And anything that you'd like to share that happened while, you know, working with them? Any interesting kissa? Because this is the most original question anybody asks in a press conference. तो मैं भी वो originality को बरकरार रखते हुए, सर कुछ pranks हुए क्या set पे? बता ही दीजिए. Prank तो मुझे नहीं पता, but एक one किस्सा, since you're asking, there is this one scene जिसके लिए which was written in a certain way, but I wanted to shoot it in the rain. Okay. And I thought of it, but we didn't realize that when we were shooting in Panchgani, it's going to be 6 degrees on that particular day. So hats off to the actors. मैंने उनको ठंड में, the peak in the middle of winter, ठंडे पानी में नहलाया in the rain. And when they were saying the lines also, they were shivering. उनके मुंह से वो तो ये natural निकल गया. बहुत ही ज़्यादा natural निकल गया, I think. But hats off to them, they did it really well, I think. When they see, they'll realize the audience. We're waiting at 21st and can't wait Did for you it. treat them to a hot chocolate then? I think the stars that these guys are on the sets, and I was a new one. Green tea. Yeah, So the rich people drink is green tea. correct. That So is- I think the hot chocolate that you had on the first day of the These set. days I'm having herbal tea. Herbal tea, sir. You know, Baba, you're very much into the rock and roll, no? That's Baba why. has gone full organic. He's very organic. Rock and roll, that's what I said. Very much rock and rolling. Arnab, I want to ask you, इसके आगे क्या करने वाले हैं? कुछ रोल होगा कुआ पेड़ बनने का तो बता दीजिए. मेरा आपको Instagram हैंडल भी दे देता हूँ मैं. अरे नहीं यार, I think दे दो, of course. And just, Ivan, we have one question. If you can just ask the audiences. Yes. Do actually any of them have like 2 brother, 1 sister? Kind ऐसा of a है क्या triad? कॉम्बिनेशन? Oh, he has. अरे वाह. भाई कैसे चलता है तुम्हारे घर में? एक सेकंड. Can we pass on the mic to him, please? कितने similar है is what we want to हाँ. know there. Can we have the mic? Bro, can you introduce yourself, please? Hi sir, my name is Akash. So मैं सबसे छोटा हूँ घर में. Like him. So मुझे जानना था बड़े भाई के हिसाब से. तो आप दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट है? Like sibling. होता है. Question. Baba, well done.
मैं हमेशा अपने भाई से जानना चाहता हूँ कि मैं फेवरेट हूँ या मेरी बहन फेवरेट है, कौन है वो कैरेक्टर? तो इससे जानना चाहते हो ना नहीं, सबसे? बड़े भाई से, cause I had the question to big brother. Oh, this is nice. Oh. He'll assume that Lethal that's the question. answer for him. वो समझ जाएगा. हाँ, मैं समझ जाऊंगा मेरे भाई का भी यही फेवरेट है. No, see, actually, as Chandan's favorite is Chitwan, which is why he keeps fighting it, and my personal favorite is Manvi. Okay, chalo main. Guys, if you have questions, please raise your hands. Yes. Yeah. What is your name, ma'am? Can you have the mic, please? Hi, Please introduce yourself. Thank you. hi, this side Pooja. I want Hi. to ask Chitwan, how similar are you to the character in real life? Do you like Chitwan? Yeah, I am very similar to. because I am very similar to Chitwan. Oh. That's why. High five. Yeah, You all should hang. definitely. But do you have like two elder brothers? I'm the elder daughter, Okay. elder brother, and younger sister. So, what is the similarity you have with Chitwan? I am the bakchod. Hey! Oh, wow. Well, Yeah. That was a mic drop moment, Sorry guys. for the language. No, it's okay. I नहीं, said आपने mother. prove- Wow. you आपने said बोल it. के प्रूव कर दिया. All right. Anyone else with questions? Yes. Oh. Yeah. One second. Can we take? बाबा ऐसा लगेगा हम लोग का rigged है पूरा 1 मिनट. हाँ. ये बिठाया गया है ऑडियंस में. Paid member. Hi, I'm Riva. Hi. Hi, Hi, how are Sumit you? Chacho, do you remember me? Chhatri wali. Of course I do. Yeah, so I wanted to ask you guys one question. Best memory from like all the seasons, best moment on the set. Best moment on the set. Actually, for me, the best moment was the first day of the first season. Because, like Arnab mentioned, the itne easily उन्होंने when I narrated the basic idea and he said, "Bro, we are doing this." So you don't believe it. So I said, "Yeah," and I went home. I was like, "ये बोला है, but थोड़ी मतलब ये सच में करेंगे," because nobody had done that before, and he actually did it. And actually, even for the third season, this is exactly how he did. कि we should do another season, and then one day I went and I said कि ये दो idea मेरे को लग रहे हैं. What do Pondicherry. you We think? said हाँ, we do something Pondicherry. in Pondicherry with Let's do something in Pondicherry on these lines. And he said, "Bro, let's do this." And we actually और on हो गया. No, I think best moment. I think Neeraj will share his best moment from the third season. But for me also, I think it's that moment when we started this, and there is a moment in third season in the last episode between the parents and the sibling, which Yeah. hopefully once you will see, you will realize. So this season also has a lot of parents, because the crisis is about the parents and the tripling. And I think the Neeraj can share what is his favorite bit. I think more than the moment, I think what the story is trying to say in its essence, which is what Arunab first, when he called me and he discussed the story with me, he said, "This is the gist of what I'm trying to say." And that really appealed to me, which is, I don't want to give it away too much, but the fact that our parents are also individuals, you know, they also are just like us. And maybe they might have, while they were bringing us up, sacrificed their dreams and aspirations and desires, but at some point, those desires will come out. Right. So to see the parents as human beings and not just as our parents, Right. you know, and to see them as people with their own desires, own Right. dreams, and they also have as much as a right to Right. fulfill that. Right. Fulfill that. I think that really struck a chord. It's a very beautiful thing that you said. Generally हम लोग अपने parents को ऐसा associate कर लेते हैं, सोचते हैं कि they cannot falter. गलती उनसे हो ही नहीं सकती. And I also personally believe that evolution not necessarily always needs to be a positive one. You evolve as people, the negatives also evolve and grow, and it's all also very perspective oriented. So I think yes. No, and I also feel that our parents' generation, if you think about it calmly, is way cooler than us. I agree. Because they've evolved so much. They come from the time of telegrams, they've seen telephone, then they've seen cell phones, WhatsApp and dating apps, and they've seen so much change, and they've made peace with it. Yeah. And we cannot fathom even the smallest thing that makes us uncomfortable. You know, like if our parents say कि आपको इस फंक्शन में आना है और आपका मन नहीं है, तो आपको लगता है अरे क्या हमको बोर कर रहे हैं यार, because we are uncomfortable doing something and we don't want to do it.
But come to think of it, they've done so many things which they could be terribly uncomfortable doing, but they've done it for us. So let's have a huge round of applause for All the parents. For all our parents. Thank you so much. Thank you, thank you. Yes, bro. Hi again, guys. Hi, Kunal. Hi again, Kunal. of course. Yeah. So I mean, I कुणाल had a कितना पैसा लेगा यार? I know, right? कबूतर चाचा. Kabootar कबूतर चाचा. Abhi finally guess कर लिया. So I have a question for Sumit and Amol both, because of course it's about the character of Chitwan. In season 1 and season 2, I mean he's the life of the show. The one-liners, jokes, Thank you. all are at his expense. But because it's for you, because you're the writer of the show as well. Now finally we see, him इसको getting a सिर्फ lot अमोल more- ने पैसा दिया मुझे लग रहा है. we finally see him getting a lot more vulnerable. We see his side coming out in season 3 as we see in the trailer, which was not really explored in season. Was it a conscious effort for you? Because now that you're exploring more seasons, go with extra shades, or it just came to you naturally? No, I mean, he's still crazy. There is no denying that. You can't take away the quirk of Chitwan. But that's what appeals to everyone. What appeals in Chitwan to everyone is not that he's doing funny things, but everyone thinks that at the core of it, he's a genuinely nice person who's kind of funny, who's like just following his heart and he's flowing and doing random things. But at the core of it, he's not an asshole. He's a good soul. You know what I'm saying? And those are the kind of people who are most attractive to us. I mean, I get really attracted to such people, who are all over the place, but when you sit with them and when you really think about them, you feel like, no, they are good people, yeah. And that's the core of him. So even in this season, you do see a little bit of a vulnerable side of him, and it's done consciously, as you said, to just underline the fact that, at the core of him, he's a genuine person. Right. Thank you. And for a quick recap of season 1 and 2, you could have seen the beautiful roadmap that has been made. And I mean, that's one of the best thing that we have seen about tripling in a season. So please have a look at that. Lovely, and thanks to Manish and his team, marketing team of Zee5, Nimisha, for putting that together. I know that a lot of people are now going to copy your idea, Manish sir. So Thanks to you guys for doing an amazing job every season, yeah. So well done. All right, guys, we're going to be taking 2 more questions. So please raise your hands, ask your question, introduce yourself. Yes, ma'am. Out behind, there. yeah. Can you? Hi everyone, I'm Anvita. My question is for the 3 of you. Was there ever any scene that you guys were shooting on the show that reminded you of your actual sibling? बोल सकते हो. I think generally, at least, if there is any argument scene, yeah, it definitely sometimes you remember your own sibling. At least that's what happens with me. I think for every sibling that's Yeah. true. Yeah. Thank you. एक और पीछे भी दे last. एक और सवाल. Yes, sir. Can you introduce, Ma'am and yes. ma'am, sir? हेलो हाय myself दीपेश फ्रॉम दैनिक जागरण एंड मेरा सवाल निमिषा जी से है डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद चाहे दर्शकों की पसंद हो कहानियों का कहना हो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं एक्टर्स का काम हो ये भी बदल रहा है बट आपने क्या चीज़ें नोटिस की कि कंटेंट को लेके ऑडियंस का प्रेफरेंस कैसे बदल रहा है तो बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सेम है कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए उनको जो कहानियाँ दिल को छूती हैं वो चाहिए चाहे कोई भी मीडियम हो चाहे वो थिएटर्स टेलीविज़न OTT तो वो सेम है लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी चीज़ जो बदल गई है इज़ अभी सेकंड चांस मिलना बहुत टफ हो गया है तो ऑडियंस के पास आज के टाइम में इतनी चॉइसेस हैं दैट दे हैव बिकम अ लॉट मोर अनफॉरगिविंग हमारे पास अब उतना वक्त नहीं है कि उनको डिसअपॉइंट करें और वो हमें दूसरा मौका दें सो दैट हैज़ बिकम really different and I think that puts a lot of responsibility on the creators and on the platforms but otherwise I think the soul and the heart of storytelling remains the same no matter what the need to be entertained remains the same. Wow. Very well. One last question, guys. One last question. I think the lady out there, there was a lady who asked. Okay, sorry. You brother. Hello. Papa, stand up, no?
and introduce yourself. please. गौरव चौधरी दिस साइड. Hi Gaurav, कैसे हैं आप? एक्चुअली आई एम गुड. ब्रदर, एक सवाल मेरे मन में आया था. द वे जब जैसे ही मैं अंदर आया, योर टाइटल ट्रैक वाज लाइक वन वर्ड वाज कमिंग continuously, the motherfucker. Okay? Everybody knows its meaning, okay? The question arised in my mind was when someone asked कि क्या आपके दिमाग में आता है जब आप इस सीरीज को देखते हो. The big brother said family. The word motherfucker was in the title track. And brother said family. It's not like matching. Can you please explain? Like title track itself has a word like motherfucker, and you are like it is a family series type style. Like I have this question. नो ट्रिपलिंग के टाइटल ट्रैक में मदरफकर का ट्रैक नहीं है, वो बीच में आता है. एंड समटाइम्स इन फैमिली ओकेजन्स देयर आर सम मदरफकिंग प्रॉब्लम्स दैट हैपन. सो Yes, I agree, but also गाना है मादा फाका. तो आपको जो लगा आपने समझा ना? okay. सर एक्चुअली वो र की मात्रा नहीं लगी थी उधर. बट जैसा सुनाई देगा, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब अंदर आया, जब वो टाइटल ट्रैक बज रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हर किसी के दिमाग में जब उन्होंने फैमिली बोला तो किसी ने पूछा नहीं होगा, बट दिमाग में वो ग्लिच बोलते ना एक नो आई टेल यू. सो when we started to make the show, the idea was to not make a family or either a sibling show which is very sanitized. क्योंकि वो वाले तो बहुत सारे हैं जहाँ पे बस में जाके ABCD गाते हैं सब लोग. वो वाले तो हैं अपने पास जहाँ पे पूजा करके वो उसके ऑप्शंस आपके पास बहुत है, जहाँ पे पूजा में पेड़ा खाते हैं सब लोग. तो ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे ये लोग मदरफकर भी बोल रहे हैं, ये लोग चिल भी कर रहे हैं, साथ में शराब भी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं. इनके दिल में कोई खोट नहीं है, इनका जीने का तरीका ऐसा है. तो आपको या तो पसंद आता है या नहीं आता है. मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बारी मैं किसी होटल में ठहरा था और वहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल था छत पे. तो मैं वहाँ स्विमिंग कर रहा था और मेरे साथ मेरे बहुत सारे को एक्टर्स भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी. हम सब स्विमिंग कर रहे थे. फिर हम बाहर आए, हमने वहाँ खाना खाया, बियर भी पी. फिर एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि यार मैं तो एक फिल्म का विलन लग रहा हूँ. क्योंकि बचपन में जब हम फिल्में देखते थे तो विलन स्विमिंग पूल से निकल के आता था और एक बियर पीता था, पर मैं तो विलन नहीं हूँ, है ना. सो इट्स जस्ट द वे यू परसीव थिंग्स. Good answer. Hello. Superb. And I just want to add to that, like you had asked, the one word that comes to your mind. I mean, the show is lot of things, and also the show is honest. So I think that is just like you say, the show is family. The show is honest, and hence, like there are no nothing has been done to overtly sanitize or make it look staged. Real है यार, imperfect है. You know, we know that's how it happens, and I think that's really what makes the show beautiful, is that it's honest and it's not trying to preach and be perfect. It was a good question though. बाबा करते सब है, बताता कोई नहीं है. हेलो. यस. हेलो. हाय मनीष. आखिरी सवाल. हाँ. हाय मनीष, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी. इतने सारे आजकल मतलब कंटेंट आ रहे हैं, तो इसको बस क्रिएट हो, इसके लिए आपने कुछ स्पेशल आप लोगों ने सोचा है ये शो को लेकर? अपने रूम में देखा कितने क्रिएटर्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने इंस्टाग्रामर्स हैं, यहीं से बस आ जाएगी. कुछ और प्लानिंग है आप लोग? You will see the marketing plans, and I think there's a huge plan around it. So a lot of action happening across media. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much, team. Thank you very much. I think you all have put a fabulous show from all of us out here, from the media family, from the creators. This is the best thing that has happened. This is the best, I think, pre-Diwali gift that all of us have received from you guys. So thank you very, very, very much. Thanks. Thank you so much. Thanks everyone. Thank you everyone. Guys, we need to do one photo. Thank you so much. With just three of you all. एक photo हम आप तीनों के साथ करना है. Yeah. Thank you. Chair, guys. I'll take the mic. मैं रो दूँ ऐसे आंसर.
हाँ एक यार Mic check. 1 2 1, 1 2 1. Hello. 1 2 1, 1 2 1. Mic check. 1 2 1. ट्रेलर में है सारे हिंट्स ट्रेलर में एक्चुअली काफ़ी हिंट्स है। इस बार भी ट्रिप है, ट्रैक है इस बार। और इस बार जो शो की गाड़ी है वो मम्मी डैडी चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ पीछे बैठे और मम्मी डैडी बहुत रैश चला रहे हैं गाड़ी। तो ऐसा कुछ होने वाला है। सर जैसा कि हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं, आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं जी। अगर रियल लाइफ में आपको कहीं जाना हो किसी ट्रिप पे तो आपको कहाँ जाना पसंद करेंगे आप तीनों लोग? ट्रैक के लिए कि ऐसे नहीं कहीं किसी आपको ट्रिप पे जाना हो कहीं भी जाना हो मैं जाऊँगा कहीं बहुत दूर, ऑस्ट्रेलिया। नहीं हम इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला सीजन ऑस्ट्रेलिया में लिखें ताकि ताकि हमको भी जाने को मिल जाए वहाँ पे। हाँ पता चले कि पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गए, तो ऑस्ट्रेलिया चले गए। अरे चलो उनको ढूंढो। साथ ही लाइक सीजन 1 में हमने देखा कहीं जोधपुर का भी सीन दिखा रहा है, सीजन 2 में कुछ अलग दिखा रहा है, सीजन 2 में 3 में हम देख रहे हैं ट्रैशर वाला पार्ट। और अगर आने वाले सीजन में अगर कुछ नया अगर करने मिले तो कहाँ पे आप सभी शूट करना पसंद करेंगे और किस तरीके का कंसेप्ट आप लाना चाहते हैं? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन हम भी हमारे इनपुट्स देते हैं। जी मतलब लोकेशन को लेके सबके अलग अलग मत हैं। मैं भूटान जाना चाहता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। इनका मैं कुछ न्यूजीलैंड ये जाके न्यूजीलैंड जाना एडवेंचर चाह रही स्पोर्ट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड हाँ, बाद में correct, ऐसे एक बोल में डाल के हम लोग एक चिट निकालेंगे अच्छा। और नासिक निकलेगा। नासिक निकलेगा और आप शायद नासिक में निकल जाएंगे। सीजन देखना चाहेंगे बट स्टिल कहाँ पे क्या और क्या करते हुए? कुछ अमेजिंग एक्चुअली मतलब आपको जो लोकेशन है वो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, बट एक 10 मिनट के बाद कितनी खूबसूरत लोकेशन है वो भूल जाते हैं लोग। फिर लोग कहानी में कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो वो भी एक मसला है। साथ में जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं या कुछ मेजर पार्ट लोगों के साथ ही लाइक सोशल मीडिया जैसे जरिया बन गया जहाँ पे आप सभी से बात कर सकते हैं, उनके भी व्यूज़ ले सकते हैं या कुछ कमेंट्स आप लोगों को आए ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो कमेंट्स आएंगे, आई थिंक ट्रेलर बाहर जाएगा, मैंने देखा है। और श्योर इस शो को तो हमेशा प्यार ही मिला है। मैंने देखा है फर्स्ट सीजन से, हम चाहे इतनी एक आँख की फोटो भी डाल देते हैं और बहुत सारे बहुत प्यार आता है। मतलब अभी तक जो कमेंट्स आते थे वो आते थे कि कब आ रहा है सीजन, और थैंकफुली हमने जब से डाला है तो सबको लग रहा है कि अरे वाह थैंक गॉड आ रहा है। और हम भी मतलब वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी कहानी हो
जो मन से हम कहना चाहें तो लाएं, ऐसा ना करें कि सिर्फ पूछा तो हमने बना दिया और फिर लोगों को मज़ा ना आए, वो बड़ी एक जिम्मेवारी का काम होता है। तो कोशिश ये करते हैं कि एक जेन्युइनली दिल को छुए ऐसी कहानी लिखें, वैसी बनाएं तो मज़ा आए। साथ ही आप तीनों से जानना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेशली सिबलिंग्स का कैसा रिएक्शन था, क्या मतलब क्या इनपुट्स थे कि नहीं ब्रो ऐसा कुछ करना है, नहीं सिस्टर ऐसा कुछ करना है, लाइक थर्ड सीजन में। मेरी बहन को तो बहुत पसंद है ये शो। इनफैक्ट वो मुझे ताने मारती रहती है कि आई कांट बिलीव तुमने एक शो किया है अबाउट सिबलिंग्स ट्रैवलिंग टुगेदर एंड शी एंड मतलब हम दोनों कभी नहीं गए ऐसे, जस्ट द टू ऑफ अस। तो वो मुझे वो और जब हमने प्लान भी किया तो पैंडेमिक हो गया 2 साल, तो अब देखते हैं कब करेंगे, बट या उसको बहुत पसंद है। हाँ, ये ताना तो मुझे भी मारा है मेरी बहन ने भी कि अरे हमने कोई ट्रिप नहीं की साथ में, सेम। तो एक्चुअली अब शो में तो बड़ी बातें कर रहे हो, सिबलिंग ये अभी करना पड़ेगा, अचीव करना है हमको। नो, वी प्लान्ड आल्सो दिस टाइम सेम। बिफोर पैंडेमिक वी वर थिंकिंग दैट यू नो वी शुड गो और फिर फिजल आउट हो गई चीज़ें। साथ ही कुछ ऑडियंस में से भी एक दो सवाल ऐसे थे कि लाइक ये फैमिली मूवी पिक्चर है दिस एंड दैट, लेकिन आजकल जो रियलिस्टिक है वही सब इस सीजन में दिखाया गया है। जी। क्या सभी के रिएक्शन थे कि लाइक हमको ये सब होता है, ये चीज़ दिखानी चाहिए, आपका इस पर क्या सोचना है एज ए लाइक? हमने कुछ दिखाया नहीं है, आप देखो शो में कुछ भी सब कपड़े पहन के खड़े हैं। ये वो शो है, खून खराबा भी नहीं है, काम किया है, कोई ऐसी कोई भी अभद्र चीज़ नहीं की है हमने। बहुत लोग मिलते हैं जो एक्चुअली में बोलते हैं कि यार मेरी मम्मी का फेवरेट शो है, मेरे पापा का फेवरेट कैरेक्टर है। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना शो के आने के बाद, जितना पेरेंट्स की जनरेशन ने शो देखा है और लोग आके बताते हैं कि किस तरह से उनके पेरेंट्स का फेवरेट कैरेक्टर है या पेरेंट्स का फेवरेट शो है, मेरे लिए सरप्राइज था। बट इट इज़ अ फैक्ट दैट पहला सीज़न दूसरा सीज़न अभी तक मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, यंग लोग जो आके बोलते हैं कि यार माई पेरेंट्स लव दिस शो। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस शो में जब भी हम में से कोई भी गाली दे के बात करता है या कुछ भी, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं चितवन लैंग्वेज, चंचल लैंग्वेज, चंदन लैंग्वेज। तो और वही होता है ना रियल लाइफ में भी। हम लाइक आई रिमेंबर इतनी बार गलती से यू से द एफ वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड देन यू लाइक अच्छा ठीक है, यू नो, देन यू लाइक ओ शिट व्हाट डू वी डू? फज Fudge, fruits. Oh fudge. Oh fish. Yeah. Lastly, any message to the all the fans? Same. I mean, we were actually eagerly waiting to come and see you guys as a family, and I'm glad that it's happened for us now. Yeah. Please अभी watch आप the show again. ये जो सवाल था कि कब आ रहा है सीजन 3, नाउ यू हैव एन आंसर टू दैट। सो October 21st. Only on Zee5. Thank you guys.